due to their vendetta. এ জিনিস চলতে পারে না। মুক্ত কর ভয়, আপন মাঝে শক্তি ধরো, নিজের কর জয়। তাই নরেন্দ্র মোদীজি বলেছিলেন, ভয় আউট, ভরসা ইন। আপনি নিজেই বলেছেন 31 কেসেস লজ এগেন্স্ট রিপাবলিক মিডিয়া। সবাই দেখেছেন সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার পানিহাটির বাড়ি থেকে মারতে মারতে তুলে নিয়ে গিয়ে পুরুলিয়ার কেসে ট্যাগ করা হয়েছে। এমন প্রচুর উদাহরণ আছে। রিপাবলিক বাংলা তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাফারার। আই নো। আর অ্যাজ এ চিফ মিনিস্টার, অ্যাজ এ হোম মিনিস্টার, আমি ডিক্লেয়ার করছি ক্যাবিনেটে আমি রিপাবলিকের সব কেসকে উইথড্র করব। ইটস মাই কমিটমেন্ট। All cases are false, fabricated, lodged by the Mamata Banerjee's government due to their vendetta. এ জিনিস চলতে পারে না। মুক্ত কর ভয়, আপন মাঝে শক্তি ধরো, নিজের কর জয়। তাই নরেন্দ্র মোদীজি বলেছিলেন, ভয় আউট, ভরসা ইন। All right, viewers, now let's move on to the big breaking news development that we're getting, and this is a reaction from Chief Minister Yogi Adityanath. Now, Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has sharply criticized the Congress party over the recent fish feast controversy, asserting that if the nation stands united in its struggle, its sovereignty will remain intact, while pointing to how Congress members had shown disrespect for India's heritage. He noted that the Congress president visited Ayodhya to offer prayers at Hanuman Gadi only to later indulge in a fish feast, observing that they chant Ram Ram, yet there is a limit to such shamelessness, and questioning who had asked them to visit Hanuman Gadi when they could simply have gone outside Ayodhya if they wished to eat fish, that is non-vegetarian food. Now, highlighting the party's duplicity, Yogi remarked that even a chameleon would feel embarrassed witnessing such behavior, wondering what manner of species had appeared in human form, one that chants Ram Ram and feigns prostration at the temple of Bajrangbali only to step outside and feast on fish. This is UP Chief Minister Yogi Adityanath, who's sharply criticizing after the controversy of a fish feast in a Congress event. He has sharply criticized the Congress party over the recent fish feast controversy, asserting that if the nation stands united in its struggle, its sovereignty will remain intact, while pointing to how Congress members had shown disrespect for India's heritage, for Ayodhya's heritage, an insult to Ayodhya. And he noted that the Congress president visited Ayodhya to offer prayers at Hanuman Gadi only to later indulge in a fish feast, observing that they on one hand chant Ram Ram, yet there is a limit to such shamelessness, and questioning who had asked them to visit Hanuman Gadi when they could have simply gone outside Ayodhya if they wished to eat fish, and highlighting the party's duplicity. Let's listen into what Yogi Adityanath has said. देखा होगा कांग्रेस के लोग केवल विरासत का अपमान ही नहीं करते। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं,
लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का। All right, viewers, now viewers, as Congress is facing backlash for serving fish during event in Ayodhya, some are calling it an insult to Sanatan Dharma. Let's listen into more reactions. अजय राय आजकल लगातार अयोध्या आना जाना कर रहे हैं और आज उन्होंने अयोध्या आया और इस पावन पवित्र श्रावण मास के उपलक्ष्य में हनुमान जी का दर्शन भी किया और उसके बाद उन्होंने जो पाप करने का काम किया है, जो है भगवान भूत भावन के जो है इस पावन पवित्र अवसर पर जिस तरह से उनके स्वागत में मछली भोज का आयोजन किया जा रहा है, अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। वही मार्ग कांवड़ यात्रियों की मार्ग है। जिस तरह से इन्होंने सनातन संस्कृति के ऊपर, इस पावनता के ऊपर कुठाराघात करने का जो चेष्टा किया है, इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। दरअसल बीजेपी का ये बहुत पुराना फार्मूला है। जब वो बुनियादी मुद्दों पे घिरते हैं, जैसे आजकल स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और चढ़ावा चोरी पे बुरी तरह से घिरे हुए हैं, तो इसलिए नैरेटिव्स बनाने के लिए, प्रोपेगेंडा के लिए कांग्रेस पार्टी के उस आयोजन को निशाना बना रहे हैं जहां मछली भात परोसा गया। मछली भात आयोजक ने, राम निहाल निषाद ने कहा कि ये उनका पारंपरिक भोजन है और ये हमेशा करते रहे हैं और ये उनका संवैधानिक अधिकार है कि वो क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे। बीजेपी वालों की तरह दिखाने के लिए नहीं कि बंगाल चुनाव है तो मछली भात खा लेंगे। अभी सावन में ही उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन मटन और चिकन खाते हुए वायरल हुए थे, तब सनातन धर्म का अपमान नहीं था। अब कांग्रेस का कल्चर है भोज देना। कांग्रेस कुछ मानती थोड़े है, मानती तो ऐसा नहीं करती कि सावन के महीने में चोरी से खाते ठीक चलता, लेकिन सार्वजनिक प्लेस पर, वो भी अयोध्या में हनुमानगढ़ी में मछली का भोज करा रहे हैं, तो ये तो उन्हीं को पसंद आता होगा। इसके लिए ये कांग्रेस को अब क्या कहा जाए। एक तरफ तो भगवान राम के भक्त बनते हैं, हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं, दूसरी तरफ मछली भोज करते हैं। ये कल्चर है कांग्रेस का। In a shocking news from Maharashtra, a massive fire broke out in the newborn ward of the Amravati District Women's Hospital in Maharashtra. Now, 3 newborn infants died after suffering burns in the fire. The fire was triggered by an explosion in a ventilator. Now, several other infants were safely rescued during the incident. Here's a full report on that. A massive fire broke out in the newborn ward of Amravati District Women's Hospital, triggering panic in the neonatal intensive care unit, where dozens of newborn babies were undergoing treatment. The fire in the neonatal intensive care unit was triggered by an explosion in one of the ventilators at around 3:30 a.m. This led to the death of 3 infants who succumbed after suffering severe burn injuries in the blaze. There were about 39 newborns admitted to the ward. As soon as the fire broke out, the nurses on the duty immediately moved the infants away from the ventilators. About 36 infants were successfully saved during the incident. All right, viewers, now let's move on to another top story that we are tracking. Now, tensions erupted in Mumbai's Mazgaon area ahead of Ganesh Chaturthi when eggs were thrown at a Ganesh idol during a procession. Now, this triggered chaos and disrupted the arrival procession of Ganesh idol. Now, the incident was followed by a clash between 2 groups, prompting police to step up security in the area. Let's watch this report. Tensions rise in Mumbai's Mazagaon after eggs were thrown at a Ganesh idol.
The incident took place during the Ganesh idol arrival procession when some unidentified individuals threw eggs at the idol from top of the building. This comes ahead of the Ganesh Utsav in Maharashtra, which will begin on the 14th of September. The incident triggered panic at the spot, with people raising slogans such as Jai Shri Ram and Vande Matram. The crowd demanded the immediate arrest of those responsible and allegedly pelted stones at the building from where the eggs were thrown. Senior police officers and heavy additional forces were rushed to the spot to pacify the crowd and clear the area. This is not an isolated incident. A similar episode unfolded in Nagpada in the August of 2022 when eggs were allegedly hurled at a procession carrying a Ganesh idol. A torch rally was held by the women of Khorai Apunba club in Manipur. They are demanding the implementation and updating of the National Register of Citizens, that is the NRC, before the upcoming census exercise. Now, the posters called for greater transparency and accountability in the process, stressing the need for authorities to address their concerns ahead of the upcoming census exercise. Here's a report. Around 2,000 women staged a massive torch rally in Keshampath Junction in Manipur. The protesters demanded NRC before the census exercise in the state. The rally was organized as part of the campaign for just and fair delimitation exercise. The campaign has been underway in the state for nearly 1.5 years as the participants allege that illegal foreigners have now occupied Manipur. The protesters raised slogans including "No NRC, no IDP settlement until census." Manipur has been witnessing such massive rallies since August 3rd, with participation now growing on the ground. Protesters have now vowed to continue their agitation until they receive a response from the Manipur government. All right, viewers, now Beijing is hosting the second World Humanoid Robot Games, a 5-day showcase where thousands of human-shaped machines are racing, jumping, and even performing Tai Chi. Now, the event tests speed, balance, and dexterity, bringing together teams from over a dozen countries to compete in dozens of sports and real-world skill challenges. Now, on opening night, robots were seen completing the 100-meter dash faster than Usain Bolt's human world record, while traditional Chinese disciplines like Tai Chi put their control and grace to the test. Now, the spectacle offers a glimpse into how quickly humanoid robotics is moving from labs to athletic arenas. 数字的奔跑姿态代表在场拼搏。随后其中国际级28人，国家级75人，国家一级120人协同行进提供了关键技术支撑。发令枪响，选手们的起跑都不错。 出马，上来！哇，上架了！是非常漂亮。来，我们来，1、2、3，哇塞，有个动作，对，是。他带孩子来看看，这是中国目前最好的机器人是什么样子的。